So tip number 1, stop it. Tip number 2, shut up. Tip number 3, go for it, beta. I support you. Ladies and gentlemen, boys and girls, most, I think, vulnerable, amazing, vivacious, and vivid Aditi Mittal. Vishal, are you going to start OnlyFans? Yeah! और मैं ना इंडिया में बहुत डर के रहती हूँ क्योंकि अगर कोई आके मेरे को बोले आयु अदिति मित्तल दैट कमेडियन, मेरे को पता नहीं है इफ यू वांट अ सेल्फी और यू वांट टू स्लैप मी, तो मैं तो हमेशा आई एम लाइक कौन मैं तो नहीं सुनी उसको कभी. आई फील लाइक एवरीवन शुड गिव अप. आई फील लाइक पूरी इंडस्ट्री खाली होनी चाहिए, सिर्फ मेरे को सारा काम मिलना चाहिए. ग्लेन तुम्हारा वीडियो निकालो, तुम्हारा इंस्टाग्राम प्राइवेट पे डालो, मेरे को कोई जरूरत नहीं है और कंपटीशन की. नमस्ते स्टूडेंट, हियर इज द कैमरा आउट हियर. Okay, nurse, oh, out there. Nurse, the students, myself is the name is a doctor, Mrs. Ludichuke, and I am a type of a doctor who likes to talk to all the youth people about all their problems, such as the youth yapa and all that. Now, next to me, I am having the youth. Glenn. Glenn. So, Glenn, tell me your problems. Yes, he is very much telling truth. Means I was standing there behind him with a knife. Okay. That is why he said it little bit out of fear also. Today on my show, I got a very vivacious personality. She is the feisty, furious, and the fantastic. When she is on the stage, she is doing the katal. Please welcome the Aditi Mittal. Thank you so much. Namaste beta, namaste. Very nice to see you beta. After so long, I have got this infectious energy in the office. See, I have only got infection. To tell you the honest. हाँ. इसके बाद energy is yours. What I'm going to do is now, हमने बहुत सीरियसली इंटरेस्टिंग सी बातें की. एक हम आपसे बात करें, आप एक कैरेक्टर प्ले करती हैं. I love that character. Yes beta. Okay, you are going to give some advice now. Yes beta. I'll give you about 4 situations. Yes. To tell me. Doctor look चुके. First, let me give the introduction. Oh no, please, Yes. intros. Namaste students, here is the camera out here. Okay, nurse, oh, out there. Namaste students, myself is the name is a doctor, Mrs. Ludichuke, and I am a type of a doctor who likes to talk to all the youth people about all their problems, such as the youth yapa and all that. Now, next to me, I am having the youth. Glenn. Glenn. So, Glenn, tell me your problems. Dr. Lutchuke, my friends have told me to ask you this question. Yes, beta, say me. They are saying that they are got the raging harmonies. Yes. Their harmonies are raging. Yes. They are the youths. Yes. They are the Gen Zs. Yes. 3 pieces of advice. Yes. Only 3 pieces of advice. Yes. You want to give them. Yes. So say beta, they are having the raging harmonies. Tell them to stop singing also. You know, miss, you cannot have so many harmonies, sing in one voice. But now see this generation Z, na? See, they are having many very problems. That is why they want only 3 tips, because attention span is so small, na? That is why they cannot listen more than 3 tips. So tip number 1, stop it. Tip number 2, shut up. Tip number 3, go for it, beta. I support you. Doctor, you are so well versed with the whole universe. Yes. Like, I was sometimes wondering, Yes. how is this very many thought processes coming to your head all at one times? So, you know, actually, I have got nothing in my inner voice. Okay. I literally, whatever is the words that are coming out from my mouth, they are starting in my mouth and ending in my mouth. Okay. So, no brains are usage. Oh, okay. Yes. If you are stuck, one more question, I am not asking the Vikas and the Vishal. Yeah, the Vikas and the Vishal, yes, but oh, they are very small, no? They are not having full daddy yet or whatever. Yes. The So, other fellow is having. where? See, Achha, I was looking for, anyway, so you are saying. Yeah, the disgusting. Vikas and the Vishal asked me to Yes. ask you. If you are trapped Yes, in an elevator yes, with the Aditi Mittal, yes. okay, with, name one of your friends, My friends is known as RJ Glenn. RJ Glenn, Yes, with the Aditi Mittal. yes. What is that one piece of advice you will give both Aditi the Mittal and the Glenn Saldana? See, I will tell them both. First, try to figure out the elevator situation because you cannot be stuck. Now, then it has to be a death match because there is limited oxygen. Na? So then I will make them fight and I will use because now signal is very good now for Vodafone or whatever. So then I will do live streaming of their death match and I will charge also like 500 rupees or whatever per death match.
आणि then one of them will kill each other and then we will roast their body and survive. But madam, in India, the roast concept is a very bad. But I have never even heard of the roast. That is why we are everything. You should not talk roast, madam. Who is it? Hello, who is speaking? I cannot hear you. Very good, very good. Madam, what's the last question? There's a Vishal in my office. Yes. He's a very considerably good-looking boy. Oh. He's that very spiritual bodybuilder. So Oh my great God. Two together. Oh my God, you are saying he's having body of the ox but eyes of the deer. So very. Very. Goodbye. He's told it to me. What he said? He's told it he wants to start OnlyFans. Oh, very nice. What advice you will give the Vishal? I would say start with the shirt on. Okay. Because then you have to eventually get to something. You can have a longer life in your OnlyFans career if you are going to start with clothes. Because then you will take off. So 1 year you can take it to come to chaddi. Don't start direct Nangu. Because first of all, Nangu enough we see on the, if you are standing by the bus stop, there will be one gents who is waise bhi Nangu. So tell him to start with clothes. With clothes. Yes. And he's always the flexing his bicep. He's always the flexing his, his... This abular or whatever. Abular muscles. Yes. So what advice would you give him? Should he continue with his OnlyFans or should he go somewhere else also? So, but I would suggest you diversify your portfolio, no? So, if you are doing OnlyFans, then you have to do only air conditioners. Then you have to, because for the high market Marwadi ladies, they prefer somebody who is more sophisticated also. So that is why, go into all the cooling items. Industrial air conditioner, only like that. Expand out your empire, hire many more, moderately lesser, better looking gents than you. Like that other guy. RJ Glenn. Yes, correct. And expand your team. Yes, but I am very much entrepreneur also. This is where entrepreneurial skills given to us. If you had the superpower right now, आपके पास ऐसे 4 comedian under your tutelage or with you to take like an Avenger group with you. 5 ऐसे comedian, 4 या 5 comedian with you. What would the prototypes be? Like what kinds? एक होता है जो stories कहते हैं, एक होता है जो political humor करते हैं. उस कौन से category के होते हैं? तो मेरे लिए तो I think एक होते kids comedy करने वाले. Because वैसे मतलब of course kids इतने beautiful kids I've realized कि they are the paneer version of human beings. Slightly boneless, वो तो मतलब loose से घूमते रहते हैं. उनको entertain करने में मेरे को बड़ा मजा आता है. मैं actually उनको improv और stand up comedy भी सिखाती हूँ. मेरे को इतना मजा आता है तो मेरे को एक kids comedian तो चाहिए ही. जो मतलब who is silly, who is dumb, जिसको शक्ल देख के बच्चे हंसने लगे, एक kids comedian होंगे. फिर एक मेरी तरह मुंह फट और completely inappropriate और जिसको पैसों की जरूरत है, कोई देख रहा है तो मेरा QR कोड 1 मिनट मेरी छाती और तीसरे मैं रखती एक पॉलिटिकल कॉमेडियन, क्योंकि यार कॉमेडी का एक्चुअली वही मतलब मीनिंग है टू बी एबल टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आर इन पावर. जो जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है ना, उनका मजाक उड़ाना ही आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडी का मेन फंक्शन है, टू हेल्प अस सर्वाइव एक सिचुएशन जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. तो एक पॉलिटिकल कॉमेडियन तो जरूर रखती. एंड देन चौथा वाला मैनेजर रखती, क्योंकि मेरे को पता है वो जो 3 कॉमेडियन है ना, वो कुछ मैनेज नहीं कर पाएंगे, बस अपनी यबलियों में लगे रहेंगे. तो चौथे को मैं मैनेजर ही बनाती. एक और जगह है, आई थिंक उस जगह पे हम एक लॉयर रखते हैं. लेट्स कीप अ लॉयर. हाँ जी, 100%. So we have this Aditi's team of Avenger comedians ready over here. For me, peak performance, and I have seen you perform live, but something I don't know why I keep going back to that video जहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया में थे. ओ भाई वो video, it's I don't know what you did. I cannot articulate it. I cannot. मैं शब्दों में से पिरो नहीं सकता as to how amazing that act was. How did you take us through that set? No, थोड़ा सा. जी, तो वो set actually it was a part of a larger set and then मेरे को फोन आया कि ये जो मतलब, और ये मतलब ABC TV पे आया था, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया के दूरदर्शन पे, I don't even know how they played that set. But they said कि हमें 5 मिनट चाहिए टीवी के लिए. तो फिर मैंने तैयार किए and then I realized कि इंडियन कॉमेडियन स्पेशली जब हम अब्रॉड जाते हैं, और आई थिंक हम इंडियन कॉमेडियंस बहुत ट्रैवल कर रहे हैं. मैं अभी केन्या होके आई हूँ. एंड आई रियलाइज कि यार बिकॉज हम वी हैव हमारी जो इनहेरेंट वी नीड टू प्रूव अ पॉइंट. आई थिंक वही है, हमारी भूख इतनी है, वी आर सो डेस्परेट टू
prove something. और also I think क्योंकि आजकल हमारा सीन मतलब 10 साल है, ज़्यादा हुआ भी नहीं है. We are all, हमारा learning curve इतना steep था कि मतलब you know एक दिन आप open mic कर रहे हो, दूसरे दिन कोई आपको hire कर रहा है corporate show करने के लिए, and you just had to learn on the go. And so I think वो वाला just that combination of those two things. मैं गई और मैंने also मैं बहुत डरी हुई थी. Really? तो मैं actually बहुत जल्दी बोल के निकलना चाहती थी. You did speak fast, but there was so much of command. Like when I am trying to say what you are saying, मेरे अंदर वो ऐसा लग रहा कि भाई क्या बोली यार, मजा आ गया. आपने मेरे दोस्त बॉब को बहुत फेमस कर दिया वहाँ पे. हाँ जी, आपका दोस्त बॉब्स. बॉब्स दो दोस्त थे मेरे in the plural form, बॉब्स. Yes. And the Virgin Islands बहुत इन्होंने फेमस कर दिया वहाँ पे इन दोनों डेस्टिनेशंस को, एक इंसान को और एक डेस्टिनेशन. What killed it, man? That set became like that set a certain benchmark also for you as an artist. Yeah. जी, I mean you know what, उसको सेट को हो गए अब 2019 में था. 5 साल हो गए. मैं चंडीगढ़ में थी रिसेंटली और मैं होटल में टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ और आके एक लड़का कहता है एक्सक्यूज मी, आयु अदिति मित्तल. और मैं ना इंडिया में बहुत डर के रहती हूँ क्योंकि अगर कोई आके मेरे को बोले आयु अदिति मित्तल दैट कमेडियन, मेरे को पता नहीं है इफ यू वांट अ सेल्फी और यू वांट टू स्लैप मी. तो मैं तो हमेशा आई एम लाइक कौन, मैं तो नहीं सुनी उसको कभी. So then he's like नहीं आप मजाक कर रहे हो, आप अदिति मित्तल हो, आपकी आवाज बिल्कुल उसकी जैसी है. So I said crazy, what a crazy coincidence. नहीं मैं तो नहीं जानती. तो फिर वो देख रहा था कि मैं मजाक करी तो कहता है अच्छा ठीक है, तो अगर आप अदिति मित्तल नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अदिति मित्तल है, उसने ऑस्ट्रेलिया में एक सेट किया हुआ है अप फ्रंट कॉमेडी का और वो इतना बेहतरीन था और मैं अभी भी देखता हूँ. And I'm telling you, I was so like मैं इतनी शॉक हो गई. I was like हाँ मैं ही हूँ, मैं नहीं किया था, thank you. हाँ Stand up comedy के लिए इस वक्त how is this scene according to you for somebody who's been there in the industry for like 15 years? Yeah. आपको क्या लग रहा है? How is the scene? Because I feel everybody is a comic now. Yeah. Everybody is doing comedy now. Yeah. So what is the scene like? Like an honest. Okay, honest. I feel like everyone should give up. I feel like पूरी इंडस्ट्री खाली होनी चाहिए, सिर्फ मेरे को सारा काम मिलना चाहिए. ग्लेन तुम्हारा वीडियो निकालो, तुम्हारा इंस्टाग्राम प्राइवेट पे डालो, मेरे को कोई जरूरत नहीं है और कंपटीशन की. बट यू नो आई हैव रियलाइज्ड एंड स्पेशली विद स्टैंड अप ना, क्योंकि मतलब जब मैंने शुरू किया था तब कुछ था ही नहीं, मतलब तब तो पैसों का भी स्कोप नहीं था. यू नो ओपन माइक पे जाकर हीरो बन के आते थे. बट आई रियलाइज ना कि वो जेनेरिक कॉमेडी करने में ना बहुत लोग हैं कि अच्छा मम्मी ने बोला कि ये, फिर डैडी ने बोला कि वो, फिर उसने बोला कि वो, मैं ट्रेन में गया सबके बाजुओं से बदबू आ रही थी, कैसा अजीब. एवरीवन कैन डू दैट, यू नो. आई मीन वो तो मतलब हम बैठ के मतलब चाय टपरी पे बैठ के वही डिस्कस करते हैं कि यार मतलब ट्रेन में बहुत बदबू थी. वो एक ट्रोप है. हाँ, आई फील लाइक इस वक्त if anything, especially with the glut of you know मम्मी डैडी and all this stuff, इस वक्त अगर आपकी कोई आपकी ऑथेंटिक वॉइस है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं जो मतलब 36,000 लोगों ने ऑलरेडी बोला नहीं हुआ है ना, तो यार यू विल राइज टू द टॉप. दिस इज वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड विद स्टैंड अप एज अ क्राफ्ट कि यार अगर इफ यू आर गुड ना, द ऑडियंस इज योर फाइनल बॉस, वो तुम्हें बुलाएंगे. बट देन ओके, दिस इज अ ग्रेट पॉइंट दैट यू लेफ्ट. Also ये होता है कि आपके peers में भी आपको respect कमानी पड़ती है. That is industry, that is not craft, that is industry. But your audience may accept you. I'm asking you this to understand. Audience आपको शायद accept कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके peers feel अच्छा, that also can weigh you down. But मैं सच बताऊँ ना, मैं बहुत ही lively, vivacious type की इंसान हूँ on the outside, लेकिन अंदर से मैं बहुत bitter, angry और bullshit not tolerator type की हूँ. तो मुझे को लगता है अगर मैं वैसी हूँ तो सारे जो मेरी जरा पैशनेट है इस चीज के बारे में वो तो वैसे ही होंगे. तो आई हैव वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माय फेलो कॉमिक्स. आई एम लाइक देखो मतलब जो यू नो देयर इज अ क्लासिक वन ना, कहते हैं कि अगर क्लब में, अगर किसी शो में यूजुअली कॉमिक्स पीछे खड़े होते हैं ना, कहते हैं कि अगर ऑडियंस से हंसी आ रही है तो मतलब अच्छा जा रहा है, अगर पीछे से हंसी आ रही है तो बहुत गंदा जा रहा है. कॉमेडियंस खड़े होकर तुम पे हंस रहे हैं वहां पे. Can anybody take up stand up comedy at any age? Yes. In fact, you know, I would recommend whatever age you are in, if you are not a 17-year-old Londa in Delhi, please, I beg you, take up stand up comedy. We are now flooded with 17-year-old Londas doing stand up comedy. I think that, you know, in fact, if anything,
the comedy scene and the craft of comedy and what we do in comedy gets enriched when we have people from different backgrounds. 2022 में मेरी एक ACL इंजरी हुई थी, मेरा एक सर्जरी होने वाला था। तब मैंने अदिति को DM किया था इंस्टाग्राम पे। मैंने सोचा अदिति क्या रिप्लाई करेगी, तो मैंने ऐसे ही DM किया था, व्हेन इज द राइट टाइम टू पुट आउट अ कॉमेडी वीडियो। अदिति सेंड मी अ वेरी स्वीट वॉइस नोट, a very nice voice note on Instagram telling me, just put that video out. Nobody really cares. Just go and do what you're supposed to do. If your heart tells you, you'll never be ready. If you have practiced it enough and if you've done this, cool. I put out that video. That's the only video I put out. That's the only video. And I have to tell you that that video had 83,000 hits on YouTube. It doesn't have a single bad review or a comment. And it gave me 1,500 subscribers. For a person who never put out any comedy content, did that. The reel that I put out hit around 2 million on that, and thanks to this lady for supporting the comedy scene, for giving जो नौसीखे आते हैं, जो पहली बार मटेरियल ट्राई करने आते हैं, उनको एक a little bit of a boost in the confidence. So thank you. यार रुला मत साले. You know what I remember? Now I remember this because I think I was yelling at you in the voice note. Yes, you are. I was shouting at you in the voice note saying it's already too late. You are stupid for not putting one out already. Yeah. And actually, if you go in the comments, one of my comments is there in the reel, being like, आ गया मैदान पे. As an artist, as a comedian, just as an artist, have you faced this? 100%. जी, I am telling you, इस वक्त ना मैं 50 रुपए के ओवर एक्टिंग नहीं, 50,000 रुपए के ओवर एक्टिंग कटवाती अगर मेरे पास उतने पैसे होते. If I had just taken that leap faster. मेरे को भी मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की 2010 में और फिर 2015 तक मैं पता नहीं हाथ पे हाथ धरे लाइव शो करी जा रही थी. मैंने वीडियो लगाया ही नहीं एंड आई रिग्रेट इट सो मच. हाँ मतलब यू नो देयर वाज दैट स्कोप कि अच्छा इट्स नॉट गुड इनफ. नोबडी इज गुड इनफ. बकवास देखिए जो आजकल लोग अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, मतलब भर भर के कचरा है. तुम्हारा कचरा क्यों ना ऐड हो वहाँ पे. एंड यू नो आई मीन इंटरनेट की एज में तो सब स्पेशली वही होता है ना कि डन इज बेटर देन परफेक्ट. Wow. परफेक्ट तो हम कभी होंगे ही नहीं, You तो can भाई keep- डन yeah. करते रहो. Keep putting up stuff. At least give it a shot. If you Yeah. don't give it a shot, you'll never know whether it Correct. worked or it didn't work. करेक्ट. आप comedians ना जो दिग्गज हैं, जो जिन्होंने बहुत साल किया, आप एक टर्म यूज करते हैं, जर्नी ऑफ अ जोक. एक जर्नी ऑफ अ जोक थोड़ा समझा दो यार, सिंपल भाषा में. You have to, oddly enough, in stand-up, you have to work in secret in front of an audience so that you can go on tour in front of an audience. It's a very like, I mean, it's very strange, I guess, but that is the journey of a joke. Like, for example, वो जो हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले सेट की, ऑस्ट्रेलिया वाला सेट एक्चुअली मैंने 2-3 साल पहले ऐसे ही लिखा था जब मैं याद कर रही थी कि मेरे को बस स्टॉप 33 के पीछे मेरे साथ ये बहुत ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ था और मैं वो लिख रही थी ऑलमोस्ट एज एन इमोशनल वेट बिकॉज आई थिंक वो मेरा ग्रोइंग अप मोमेंट था. आई हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट एंड देन फॉर अ चाइल्ड टू एनकाउंटर समथिंग लाइक दैट, इट रियली चेंज द वर्ल्ड फॉर मी. एंड तो मैं ऐसे इमोशनली लिखी थी वो 3 साल पहले एंड देन सडनली व्हेन आई वाज वर्किंग 2 years एंड मेरे अपने जर्नलिंग में तब मेरे ऐसे लाइक आई रिमेंबर आई वाज सो सैड एंड आई थिंक बिकॉज उस वक्त क्या हुआ था, मैंने वो देखा एंड देन मैंने मम्मा को जाके इमीडिएटली बताया, मम्मा वो हो रहा है, यू नो, ओ माय गॉड उसने, एंड मम्मा ने मेरा जाना बंद कर दिया. एंड आई जस्ट वाज लाइक, आई रिमेंबर फीलिंग सच अ सेंस ऑफ इनजस्टिस एंड इट वाज सो अनफेयर कि मतलब उसने किया, अब तुम्हारी गलती, तुम घर पे बैठो, तुम नहीं अकेली बस पे जा सकती. एंड आई रिटन लाइक दैट एंड देन यू नो व्हाटएवर, जब मैं वो सेट लिख रही थी आई वाज लाइक हाँ यार वो मेरे को इंसिडेंट याद है एंड आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग एंड I think of course you know they say na comedy is tragedy plus time. Right. तो मेरे को टाइम मिल गया था वो प्रोसेस करने का एंड that's how you know and of course मैंने ऑस्ट्रेलिया में थी ना, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में ही जाके आई थिंक 2 हफ्ते पहले आई हिट एवरी माइक. मैं मतलब वहाँ पे इंसान 3 खड़े थे, मैं सेट शुरू हो जाती थी. मतलब they were like हम कॉफी खरीदने आए हैं स्टारबक्स. I was like सर सुनो, do you know that by bus number 33, बिकॉज वही है कि वही रूटीन करना था, बोलते रहना, मतलब यू कीप डूइंग इट टिल इट बिकम्स परफेक्ट. एंड द गोल्डन रूल इज you have to know all the rules to break them. And the only way to know all the rules is to just do. And then when you get on stage, you break them all.
Wow, this was like a masterclass in stand-up comedy. Aditi Mittal, Course 101 coming to you. Veer picked up, I remember he took your name, Ronak's name. If you had to pick up 3 comedians at this point of time and say, okay, these 3 Amazing. doing work right now. So Hindi English में combo, right? I would say कि English में there is Kajol Srinivasan. She's fantastic, dude. What a clever woman. I'm so impressed by the way her brain works. She used to conduct writing classes during the lockdown, and I used to be a part of that writing thing. That she's creative writing classes on Nice. Zoom. Kajal is one of the most intelligent people. Her observation skills and the way she's just You know, even on Twitter, she's so good. yaar. So good. उसको मतलब news गुजरती नहीं उसकी आंखों से without her like coming up with a joke about it. I am so jealous. And you know, when I met Kajal, and I used to not have I never mustered the courage to ask her for a dance. So I used to go to Catholic Gymkhana, and Kajal used to come there. Was like she was a brilliant salsa dancer, yeah. And I was like, ये मैं full dirty dancing वाला ये वो करने वाला, बोला ये इतनी poised है, इतनी amazing है, मैं इसको क्या जाके बोलूँ मैं अपना वैसा full funky moves करूँ इसके सामने, तो मैं कभी पूछा नहीं था ना, and I said, Kajal, are you the same girl who used to come to Catholic Gymkhana? No. I'm like, she's like, yeah, the same one. I was like, oh yeah, but why did I ever ask? Okay. But Kajal and I have amazing conversations because she was telling me this, and I mean, you know, she also again, she's observed things that I felt like I went through, but I didn't even have the words for it. वो कहते मुझे कि you know वो और एक मेल कॉमिक शो कर रहे थे बैंगलोर में, हाँ. तो और सेम रात को, तो फिर उसको एक लड़की का मैसेज आता है, हे ह्यूज फैन, तो कहती ग्रेट, कहते कि कैन आई कम फॉर शो, नो शी सेज कैन वी हैव कॉफी, सो शी सेज आई हैव गॉट अ शो इन द इवनिंग, तुम शो के लिए आओ ना, तो कहती कि नो आई हैव टू गो फॉर दैट मेल कॉमिक्स शो, सो आई वांट टू हैव कॉफी विद यू. And Kajol was brilliant. She's like, I don't know why people get the impression that we are their friends. I just thought it was brilliant. She's like, I'm not your friend. You like my work. Come watch my work. Oh my God. It's so powerful when someone can nail that. And I was like, oh my God, I've gone through this exact thing. Where लोग मतलब मैं किसी शहर में जाती हूँ तो लोग are like, नहीं चलो कॉफी के लिए मिलते. क्यों भाई? तुम्हें कौन सा जानती हूँ? We'll discuss the last 6 Instagram posts that we saw. No, we have nothing in common. तो तुम मतलब शो के लिए आओ, वहां पे जाके फोटो लेंगे, हैं करेंगे, वो तो हो जाएगा. But she just made that observation and I died laughing. I was like, genius. She's Bang on. And Then in the south, there is this Sonu Venugopal who's already a huge star. Sonu was a part of Fever in 2013. You're kidding me. 13, 14, she was a part of Fever. 11, 12, 13, I think, yes. So I met her this time. I was doing shows in Bangalore like literally a week ago. तो वो आती है शो के बाद. She's like, oh my God, you're so fun and all this stuff. I said, listen, I went and I had seen her show the previous day. I said, look, I'm fun and all, but you are brilliant. Because she also code switches Kannada, English, Hindi. And dude, she's got such a, she's got that, you know, जो हमारा, we are very animated and we are like, you know, overacting के 10,000 रुपए काट or whatever. She's got a really nice, quiet energy, but it's everywhere. And I knew it. यही होगा ना. And she's also very driven. She's very driven. Very driven. I mean, it's been like a year since she's been doing stand-up. She's already selling like, you know, 1,000 rupee tickets. जो मेरे को हमारे वांदे यहाँ पे लगते हैं. उसके हजार रुपए के मतलब, you know, 1,000 लोग खरीदे बैंगलोर में. Wow. That's how well she's doing. So I'm super impressed by her. And then there is one girl in Hyderabad called Sravanti. Sravanti is a terrible person. And that's why she is hilarious. She says, oh my God, you know, she's another one that, like, if anyone is in Hyderabad, please go watch Sravanti. She's a terrible person. And that's what makes her a fantastic comedian. She won some state award or something recently, which was crazy. I was like, tere ko diya? She's like, Aditi, I don't know, they just give these things out. And I was like, amazing. And so these 3 comics to watch out for, to go look out for. जाके इनकी टिकटें बुक कीजिए. When's your next ticket to a show that we can book and watch? You know, my next ticketed tour is going to be in December. So I am doing, I think, you know, they say na कि first half of your career you work on luck. ये मतलब, oh my God, ये कैसे हो गया? I'm just in the right place at the right time and this is how it works. Then the second half of your career you work on hard work because you're like, now that I've gotten here, you know, let me dig my feet in, let me do my best.
and then the third part of your career, you spend money on yourself. On yourself. You invest in the business. You invest in the business. And I think I am going on tour in December, दोस्तों. Please come and watch me. बहुत ही बढ़िया शो है. वीर ने कहा है. ग्लेन, अभी मैं उसको इतना पीटूंगी क्योंकि बोल देगा कि it is a brilliant show. You know, I love this energy because sometimes क्या हर बार अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो who can lift your spirits up, it's spiritual intoxication is what I call it. And it just works because it works like magic. You don't know. A lot of times, I don't think, Aditi, you realize what you can do for people, and you should know that, not because we're on camera, not because of my radio show, but as a person genuinely. Thank you for filling this world with a little more laughter, a little more smiles. May this universe give you back 100-fold what you're giving, and may you see the three of us very soon at an open mic. And then we'll come and ask you, Aditi, we placed a heart on the table. छुरे से मारोगी किसको? Serenade करोगी? I will be standing at the back laughing. I cannot tell you why. Ladies and gentlemen, boys and girls, most, I think, vulnerable, amazing, vivacious, and vivid Aditi Mitra.